stay hungry, stay foolish, plus 2 second year English. Yes or no? Invitation to English 2. काली आमे ऑलरेडी स्टार्ट करथिले क्लास टा आज एग्जैक्टली बेटा मोर बहुत टिके कामो थिला आई वाज अ लिटिल बिजी देया दैट्स व्हाई आई वाज अनेबल टू टेक द क्लास इन टाइम बट आई थॉट बिकॉज टुमारो इज संडे आसंते काली तो मु क्लास करि परिबिनी तो आज क्लास टा नहीं जीवाटा भलो दैट्स व्हाई आई केम लेट हाफ एन आवर लेट आधा घंटा लेट हो गला पिले नो प्रॉब्लम देर आए दुरुस्त है पढ़िवा आज ठीक अच्छे तो आम आगु पढ़ी सारी जो कि स्टीव जॉब्स कौन करते सी रीड कॉलेज रे माने एडमिशन नेले एडमिशन नेला पर कौन है फर्स्ट 6 मंथ पर से कॉलेज छाड़िले देन जॉइन देयर 18 मंथ्स मोर एज ए ड्रॉप इन स्टूडेंट्स आ से कहते स्टोरीटा तो मो सहित घटला बिफोर आई वाज बर्न मो जन्म होगा पूर्व मो सहित सब घटुला ये सब जमीक मोर माँ थी गोटे माने यंग अनवेड कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स नहीं कि आउ से चाहूला जे मत आडप्ट जो मैंने करेंगे से ग्रेजुएट कि ग्रेजुएट हवा दरकार तो गोटे लॉयर दंपति मत माने आडप्ट करने चिंता कले से किंतु फाइनल मोमेंट जो से जानिले गोटे पुओ जन्म होती बोलिकी से मना करदे तो बाय द बाय वर्तमान जी माँ बापा से एक्सेप्ट कले तो यही सब घटनाक्रम हो जाइए आम पढ़ीचे आम आज स्टार्ट करवा परवर्ती पैराग्राफ सो एंड 17 years later 17 वर्ष पर आफ्टर 17 years later I did go to college मु कॉलेज गली एज माय पेरेंट्स वर प्रॉमिस्ड जमीती से माने मते प्रॉमिस करिथिले प्रतिज्ञा करिथिले जे तुम पुओ आमे पढ़िनु ठीक अच्छी बट योर सन विल वन डे गो टू कॉलेज तमर पुओ निश्चित भाव गोटे दिन कॉलेज जीव तो आफ्टर 17 years later आई डिड 17 years later डिड आई गो टू कॉलेज मु कॉलेज गली 17 वर्ष मोर जते बेला मु कॉलेज गली बट नाइवली What do you mean by naively? Naively means simply. Naively choose a college. Got college mu pasand kali. Choose कहले पसंद करिवा. Choose a college that was almost as expensive as Stanford. Expensive कहले कौन पिले costly. Expensive कहले yes it is costly. So बहुत पैसा खर्च बहुत होता एज एक्सपेंसिव एज स्टैनफोर्ड रे जी खर्च हुए से ही कॉलेज भी से खर्च होता मुझे भाया गोटे कॉलेज चूज कली किए चूज कला यस स्टीव जॉब्स यस और नो एंड ऑल ऑफ माय वर्किंग क्लास पेरेंट्स मोर जो बापा माँ मत जो मैंने एडेप्ट करुले दे वर वर्किंग क्लास पेरेंट्स काम करके चलुले वर्किंग क्लास पेरेंट्स सेविंग्स जहाँ भी जमा पूंजी तांकर थिला सेविंग्स वेर बीइंग स्पेंट ऑन माय कॉलेज एंड ट्यूशन ऑल द सेविंग्स बीइंग स्पेंट ऑन माय कॉलेज फीस एंड ट्यूशन मो कॉलेज एवं ट्यूशन बाबद को मो बापा माँ जहाँ भी रखी सब शेष हो गला फिनिश्ड स्पेंड ऑन माय कॉलेज ट्यूशन आफ्टर 6 months 6 मास बीतीगला आफ्टर 6 months I could not see the value in it. मु जो पाठ पढ़ुली से पाठरे मत कौन से मूल्य मिलला भाया लगिला ना I could not see the value in it. So I had no idea. मो पाखे कौन भी आइडिया नथिला मु भाभी ही पारु नथिली I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me. I had no idea what I wanted to do with my life and how college was going to help me. मु जान नथली मु कौन करी आउ ये कॉलेज रे जो पाठ पढ़ुची से पाठटा मते केमिति हेल्प करिवो सहाय्य करिवो टू फिगर इट आउट ताको बिल्ड करबा पई ताको रिबिल्ड करबा पई से तैयारी करबा पई मोर जो रास्ता थिला मोर जो करियर थिला म करियर निर्माण करबा पई मु कौन हेबी नो आई हैव नॉट डिसाइडेड and how that study or the things I was being studied there how it will help it no idea
And here I was spending all the money my parents had saved their entire life. And there, what I was studying, I have already, spent all the money of my working class parents. And I had no idea how it will help me. ମୁଁ ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମୋତେ ସେ ପାଠ ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ୱେ ଟିଚିଂ ଦେୟାର। ଯାହା ପଢ଼ଉଥିଲେ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନଥିଲା। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ଦେନ୍, ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିବି। So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. So I decided to drop out. All is well, all is well. I told to myself, I said to myself, all is well. କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି, ନିଜକୁ ନିଜେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି। yes or no? So I decided to drop out. Drop out କହିଲେ କଲେଜ ଛାଡ଼ିବା। Getting me? So what happened exactly? Yes, I had no. So I decided to drop out and thought that it would all work out okay. Shabu thik habo, all is well, all is well. Shabu thik habo. I would drop out again. College chhadi dili. I quit the college. It was pretty scary at the time, and it was pretty scary at the time. ସେତିକି ବେଳେ जो ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେଲି, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗୋଟେ ଡରାବନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଡର ମାଡ଼ୁଥାଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେଉଛି, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ରିଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବନି ତ। ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେଉଛି ୟା ଦ୍ୱାରା ମୋ କ୍ୟାରିୟରଟା ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଯିବନି ତ। ସମଥିଙ୍ଗ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍, ଦ ଥିଙ୍କିଂ ସମଥିଙ୍ଗ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ was there inside me at the time. So what happens then? All of the time my parents had saved their entire life, so I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time. It was pretty scary at the time. But looking back, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଦେଖେ, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. That decision, whatever decision was there on the day, whatever decision I had taken on the day that I had to drop out from the class, it was one of the best decision of my life. ମୋ ଜୀବନର ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ସେଦିନ ନେଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଦେଖେ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। I remembered the minute I dropped out. The minute I dropped out, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଲି, କଲେଜରୁ ବାହାରିଲି, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲି ମୁଁ, I could stop taking the required classes that didn't interest me. I could stop taking the regular classes that was not interesting for me. କଲେଜ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୋତେ ଆଉ କିଏ ଫୋର୍ସ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁ କ୍ଲାସ୍ କାହିଁକି ଆସିଲୁ ନାହିଁ, ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କାହିଁକି କରୁନାହିଁ ବୋଲି। ୟେସ୍ or no? ତାହେଲେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନଥିଲା, ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି ନାହିଁ। and begin dropping in part time ହିସାବରେ, begin dropping in on the ones that looked interesting. ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁ ପାଠ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ପାଠକୁ ଡ୍ରପ୍ ଇନ୍ ହିସାବରେ ପଢ଼ିଲି, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ ପଢ଼ିଲି। ଚାରିଟିରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ ଇନ୍ କୋର୍ସ ଦିଆଯାଏ, ଡ୍ରପ୍ ଇନ୍ ହିସାବରେ ପଢ଼ିଲି। It wasn't all romantic. Look at the wording. It wasn't all romantic. ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଯେମିତି ଶୁଣୁଛ, ଏତେ ଭଲ ବି ନଥିଲା ଏଇ ଘଟଣା ସବୁ। ମୋ ସହିତ ଏତେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତୁମକୁ ନାରେଟ୍ କରୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତ ନଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍। ଏତେ ସୁଖକାରୀ ସେ ଘଟଣା ନଥିଲା ଯାହା ମୋ ସହିତ ହେଉଥିଲା। Why? Look. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room. I did not have a dorm room. D-O-R-M, dorm. Dorm कहले पहले, you can say restroom, you can say bedroom. So I did not have a dorm room. Dorm कहले, yes, rest, you can say rest. I did not have a dorm room. ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଘର ନଥିଲା।
ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଘର ନଥିଲା। I did not have a dorm room, so I slept on the floor. So what did I do? I slept on the floor. ମୁଁ କୋଉଠି ଶୋଉଥିଲି then? ମୋ ପାଖରେ ତ ଶୋଇବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ନଥିଲା, because I have already quit the college. ମୁଁ କଲେଜ ଛାଡ଼ି ସାରିଛି। Yes or no? So what I did then, I slept on the floor in friends' rooms. I slept on the floor in friends' room. ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଥିଲା, ତାର ଚଟାଣରେ ମୁଁ ଶୋଉଥିଲି। This is what we call, beta, after the gold is being burnt, we get the pure gold. ସୁନାଟା ଯେତେବେଳେ ଜଳେ, ସୁନାଟା ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଏ, ରିଏଲ୍ ସୁନା ଆମକୁ ମିଳେ। This is what we call the struggle. Yes or no? ତାକୁ କୁହାଯାଏ struggle. So I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles. For the 5 cent deposits to buy food with. So what happens? I returned Coke bottles. ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ପିଲେ, जो लोक मैंने पी माने यूज कला परे ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स पी सारा पर जो बटल सब फिंगती मु कौन करूँ से बटल सब कलेक्ट करूँ। लुक एट द सिचुएशन। आई रिटर्न कोक बटल्स फॉर द 5 cent डिपोजिट टू बाय फूड विथ। मत 5 cent मिलूला से बटल्स को देला परे मत 5 cent। 100 cent is equal to $1. जेमिति हमर 100 पैसा is equal to 1 rupee, 100 cent is equal to $1. तो मते 5 cent मिलुथला, 5 पैसा मिलुथला हम भाषा रे जदि मु कहिबी। टू बाय फूड विथ, खाद्य किनिबा पई मो पाखे तो किछि नथिला ना, नथिंग वाज देयर। Food with, and I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. And what I was doing then? आउ कोन करथली बिले? Yes, I would walk the 7 miles across town every Sunday night. प्रत्येक रविवार दिन राति रे मु 7 माइल चली के जाउथली टाउन भीतर हेकिरी। I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal. गोटे वक्त पेट पूरा भोजन खाइबा पई 7 दिन भितरे मते जो मुठे खाइबा पे मिलुथुला, 7 दिन भितरे मते खाइबा पे मिलुथुला गोटे थर गोटे दिन। 7 दिन भितरे गोटे दिन केवल मु पेट पूरा खाउथुली। जस्ट लुक एट द सिचुएशन ऑफ स्टीव जॉब्स। 7 दिन भितरे से गोटे दिन पेट पूरा खाउथुले, बाकी दिन केवल से 5 cent डिपोजिट रे खाउथुले। So good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it and I loved that meal. जो हरे कृष्ण टेम्पल इस्कन मानकर जो हरे कृष्ण टेम्पल होता है, से हरे कृष्ण टेम्पल मानकर भंडारा हुए से माने फ्री रे खाइबा को दियंते। हिंदू मानकर प्राय सब मंदिर रे खाइबा मागणा मिलता है। सो मु 7 माइल कहले पाखापाखि 11 किलोमीटर मु सब रविवार दिन चली के जीवी टाउन भीतर देखी से गोटे पेट पूरा मिल खाइबा पाई। हरे कृष्ण टेम्पल आई लव्ड इट। आउ से खाद्यटा मत भल लगुला। एंड मच ऑफ व्हाट से जहाँ भी हो सबुठार बड़ कथा है मच ऑफ व्हाट आई स्टम्बल्ड इनटू बाय फॉलोइंग माय क्यूरियोसिटी एंड इंट्यूशन। क्यूरियोसिटी जिज्ञासु मनोभाव, क्यूरियोसिटी जानिबार इच्छा, इंट्यूशन यू कैन से एटीट्यूड, इंट्यूशन कल अंतरात्मा मोर जो मो भितर जो जानिबार इच्छा थिला, मोर आत्मार जो डाक थिला, क्यूरियोसिटी एंड इंट्यूशन टर्न्ड आउट कहले रिजल्टेड तार फलस्वरूप मो भितर जो क्यूरियोसिटी और इंट्यूशन थिला तार फलस्वरूप कौन है बोले इट बिकेम प्राइसलेस कहले दुर्मूल्य। मोर इंट्यूशन आ क्यूरियोसिटी को फुलफिल करबा पाई मु जो कौन करूथली फिर स्टम्बल कहले झुंटेबा मु जो परिस्थिति मते जो ठक्कर मारुथला मु जो घटनाक्रम भितर छंदी हो जाइथिली यही घटना देके मु जतबेले पार हो गली घटनाक्रम को जतबेले क्रॉस करके पळाइले इट बिकेम प्राइसलेस फॉर मी। से समय जो टिके स्ट्रगल मु करथिली दैट वाज प्राइसलेस
Durmulya, priceless for me. By following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you an example. Let me give you an example. ताहले मते गोटे उदाहरण दौची तमे शुण. रीड कॉलेज मु जो कॉलेज रे पढ़ुतली सेटा थिला, yes, it was Reed College. Reed College. So I was studying there and Reed College. Reed College at the time offered perhaps the best calligraphy. What do you mean by calligraphy? It is calligraphy means, I can say handwriting art. Handwriting art or the art of handwriting. Calligraphy means what? The art of handwriting. Yes or no? So perhaps the best, perhaps the best calligraphy instruction in the country. Sorry, America re pura America re shamare Reed College thila, sei college jo college re sabutar best calligraphy class sikautula, mane handwriting the art sikautula sethi. Throughout the campus, sei college ra campus sara, every poster, pratyeka poster, every label, pratyeka label, on the every drawer, pratyeka drawer upere was beautifully hand calligraphed. Was beautifully hand calligraphed. Sabu jagare hatere lekha aitila, sundar bhavare lekha aitila, hatere lekha aitila. Jaha bhi poster lagitila, sabu hatere lekha aitila. Jaha bhi label lagitila, joti kuta logo lagitila, label lagitila, sabu hatere lekha aitila. Everything was written by using hand. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, as you know, just a minute ago I have already told through the text that he had dropped out from the class and he is just working as drop-in students. So, because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, Sibjav is telling us, Sibjav कहउचंती जे जेहेतु मु कॉलेज छाड़ी सारिथिले मते रेगुलर क्लास करिवार नथिला. Then what I did? I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. And I decided munispatinali to take calligraphy classes, say handwriting the art sikiva pai. Because I was interested toward that. It was, just enchanting. I was interested to learn it. Yes or no? So, how to do this? Kemiti karibaku hai, kemiti karibaku mo sikiva pai gale. I learned about serif and sans serif typefaces. Serif and sans serif. These are the kind of typefaces, serif and sans serif. So kind of typefaces, okay, about varying the amount of space between different letter combination. About what is serif and sans serif? Sans serif ko likon pile. It is about, the amount of space, varying the amount of space. Mane duita letter combination bhitere space kete rahibo. दुईटा डिफरेंट लेटर रहिले डिफरेंट स्पेस केते रहिबो आ केते स्पेस देले से लेटर दुईटा सुंदर दिसिबो लेटर गोले केते रहिबो लेटर चौड़ा केते रहिबो द आर्ट ऑफ हैंडराइटिंग दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ हैंडराइटिंग different letter combination about what makes great typography great and this is the art that makes the great typography great typography कहले पिले से माने टाइप the science of typing that is called typography. जो टाइपोग्राफी अच्छी टाइपोग्राफी को सुंदर करी तोले एटा माने जेते बडा में ठीक से स्पेस दबा amount of space between letter that makes the great typography great. It was beautiful and that art whatever being taught there जहाँ पढ़ाओ तोले जहाँ से सिखो तोले it was beautiful बहुत सुंदर historical ऐतिहासिक मतलब बहुत बढ़िया लगो तोला and artistically with knowledge suitable in a way that science can't capture it. Till that time science hadn't captured the art. সেই সময় পর্যন্ত সায়েন্স এই আর্ট কো ক্যাপচার করি পারি নথিলা. Exactly. And I found it fascinating. What do you mean by fascinating? Yeah, it's interesting. मत बहुत भल लगिला. फैसिनेटिंग कहले कौन पिले? यस इंटरेस्टिंग माने आकर्षणीय. फैसिनेटिंग कहले आकर्षणीय. FASCINATING. यस
fascinating fascinating कहले आकर्षणीय so I find it fascinating मते बहुत आकर्षण माने बहुत बढ़िया लागुतला none of this had even a hope of any practical application in my life none of this had even a hope of any practical application in my life जहाँ मु पढ़ुली जहाँ मु करुली यही सबूर practical application माने कौन practical प्रकृत भाव रे प्रयोग practical application कहवा जदि natural application माने मो जीवन सहित मो बंचिवा शैली सहित डायरेक्टली ए माने इन्वॉल्व नथिले पिले गोटे प्रश्न उठे थरे मते माने गोटे साइंस पिला मु क्लास करूथा इंग्लिश क्लास कॉलेज रे गोटे पिला पचारला सर मु फिजिक्स पढ़ुची हैज इट एनी डायरेक्ट रिलेशन विथ माय लाइफ जीवन सहित यार सीधा संपर्क अच्छी कि मु कहली अच्छी भी आउ नहीं भी सो सिंपल सो इजी तो पिले आम जदि सबू जिनस को देखा जहाँ भी पढ़ुचे व्हाट एवर वी आर स्टडिंग इट हैज रिलेशन विथ आवर लाइफ एंड व्हाट एवर वी आर स्टडिंग इट हैज नो रिलेशन विथ लाइफ जहाँ पढ़ुचे तार संपर्क अच्छी जहाँ पढ़ुचे तार संपर्क नहीं इट्स डिपेंड अपन योर एटीट्यूड तुम एटीट्यूड उपर डिपेंड करेगा जो वेदर व्हाट यू आर स्टडिंग यू विल इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ yes or no and if you are implementing it then it has relation with your life if you are not implementing it it has no relation with your life so simple so easy isn't it okay mo algade jaune bile so none of this had even a hope of any practical application in my life je kono jaha bhi padutuli jaha bhi kortuli yar practical application mo life sahito notila but kintu 10 years later 10 वर्ष परे 17 माने 27 वर्ष जेतला मत होउतला 10 years later when we were designing the first Macintosh computer जेतबे मो फर्स्ट Macintosh computer जाको हम मैकबुक बोली कहू पिले देखि तुम मॉडर्न पिला तुम जानो तो मैकबुक Macintosh computer सेटा मैक बोली कहा जाय ताको Macintosh computer जेतबे तैयार कलु इट ऑल केम टू मी मोर सब जिंस मने पड़ी गला मो जहा पढ़ितली सब मोर मने पड़ी गला and we designed it all into the Mac आउ सबू तक आम भर्ती करदेलु मु जहाँ पढ़ी जो आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ी से हैंड रईटिंग विषय पढ़ी सब मुझे कौन कली डिजाइन करदेली सॉफ्टवेयर माध्यम भर्ती करदेली कौन Macintosh कंप्यूटर भितर इट द फर्स्ट कंप्यूटर एप्पल कहीं चलला एप्पल माने एते शीघ्र ग्रो करिवार कारण होची एटा पिले गेटिंग मी so what happens then it all came back to me पुणी थर मोर मने पड़िला सब कथा and we designed it all into the Mac it was the first computer with beautiful typography Macintosh computer थिला प्रथम कंप्यूटर जो थरे तमे कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करि परिबो नहले ता आगुरु को गोटे सिंगल कलर रा कंप्यूटर सब आउथले रे बिले से माने सिंगल कलर को सिंगल साइज रा लेटर केवल इटाली साइज ये सब साइज सब चेंज करिकी करूचे स्पेस देकी करूचे आग आड़ पछुआड़े जाऊे आम यही सब व्यवस्था कंप्यूटर नाला Macintosh न आसवा पूर्व फर्स्ट कंप्यूटर विथ ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी इफ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन दैट सिंगल कोर्स इन कॉलेज मुझे ड्रॉप आउट से पाठ छाड़ी न था आ ड्रॉप इन हिसाब से जन्म माने जॉइन करी न था The Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. The Mac would have never had multiple typefaces. Multiple typefaces जो Macintosh computer है तो मैं देखूँ चो Macintosh computer है multiple typeface न था and proportionally spaced font जो fonts दे कि माने विभिन्न प्रकार fonts तो मैं दौचो letter size letter combination करूँ variety of letter combination you are using in Macintosh computer. It mustn't have been there. It are not thanta. And since Windows copied Windows version जब आइला Macintosh computer को Windows copy कला Windows just copied the Mac. I would have never it is likely that no personal computer would have them.
नो पर्सनल कंप्यूटर जेते पर्सनल कंप्यूटर पीसी यूज कर तमें से भी यही टाइप फेसटा न था टाइपोग्राफीटा जमारू न था इफ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड आउट मु जदि कॉलेज छाड़ी न थामती से दिन इफ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड आउट आई वुड हैव नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन दिस कैलीग्राफी क्लास मुझे से ड्रॉप आउट हो न कॉलेज छाड़ी न मत से ड्रॉप इन हिसाब से मुझे कैलीग्राफी शिखी पारी न था and personal computer might not have the wonderful typography that they do and personal computer mustn't have the wonderful typography that they do ଆଉ पर्सनल कंप्यूटर जो सुंदर भाव तुम टाइप कर पारुच से टाइप फेस न था आ तुम टाइप कर पारु न था लुक इट हैज रिलेशन यस और नो ऑफ कोर्स इट वाज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मु कॉलेज रे जेते बेले थिली पिले से समय मु आगो को देखिकी जानी पारु नथिली जे ए जो मु पाठ पढ़ुची मु वर्तमान जो कॉलेज छाड़ुची जो घटनावली मो सहित घटुची दिस इज व्हाट कॉल्ड कनेक्टिंग द डॉट्स मु आगु कही सो वट एवर थिंग्स आर हैपनिंग वट एवर थिंग्स आर वट एवर सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू दीज आर द डॉट्स एंड दे आर इंटरकनेक्टेड तो ये स्टीव जॉब्स कहते से समय मत लगुला मुझे से समय जापर नी ये जो घटना सब घटुची यार मोर फ्यूचर सहित कौन रिलेशन अच्छी यार प्रैक्टिकली मो सहित कौन एप्लिकेशन अच्छी प्रैक्टिकली मो लाइफ रे जिनस को केमती लगेबी बट नाउ वर्तमान मुझे ठिया लुकिंग फॉरवर्ड व्हेन आई वाज इन कॉलेज बट इट वाज वेरी क्लियर लुकिंग बैक एट 10 years लेटर किंतु आज मु 10 वर्ष तलर से कॉलेज दिन कथा मन पकईले मत लगे जे भगवान ये मत से दिन कॉलेज छाड़ापी कही आ मु कॉलेज छाड़ी मु ड्रॉपिन हिसाब से जाइली ये कंप्यूटर नुआ जिनस गोटे सृष्टि करी बोली से पे कह जाए भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल प्रत्येक सिचुएशन पाखे किसी ना किसी भल उद्देश्य निश्चित भाव अच्छी सो व्हेन आई वाज इन बट इट वाज वेरी क्लियर लुकिंग बैक हियर 10 years later again you can connect the dots looking forward you can connect the dots looking forward आगु को देखी वर्तमान को तुम डिजाइन करी पारिबो नाही तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा भविष्य को डिजाइन करिबो मन रखिबा you can design you know your future you can design your present and your present will design your future remember this is the golden statement you can't design your future you can design your present and your present will design your future so again you can connect the dots looking for you can only connect them looking backward so you have to trust तुमको विश्वास करिवार अछि so you have to trust that the dots will somehow connect in your future that the dots whatever situation you are going through it has connection with your future तुम भविष्य सहित यार संपर्क अछि you have to trust in something तुमको किछि तो विश्वास करिवा को पड़िबो you have to trust in something किछि तो विश्वास करिवा पय पड़िबो your gut your courage destiny fate and life जीवन कर्म work whatever so you have to believe in something your God your destiny your life your karma whatever this approach कहले पहले चिंताधारा approach कहले कोन चिंताधारा this approach has never let me down this approach has never let me down ये जो चिंताधारा मो भीतर अच्छी मत केबे तळु को जीवा को देई नाही never let me down and it has made all the different in my life and it has means this approach has made all the difference in my life मो जीवन रे जहाँ भी पार्थक्य सृष्टि होईची मो जीवन रे जहाँ भी किसी अलगा करछि एई अप्रोच लाई करछि कारण मु केबे कोनोसी सिचुएशन ऊपर विश्वास करनी कौन सी सिचुएशन जहाँ भी सिचुएशन आई सामना करवाटा शिखी आउ सब सिचुएशन को मोर स्किल द्वारा समाधान करी एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टीव जॉब्स एंड ऑर्डिनरी पीपल सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस आज ये पुणी देखा हम आसंता सोमवार दिन यही अध्यायर परवर्ती अध्याय आसंता सोमवार दिन 3टा बेले आम हिस्ट्री मैराथन क्लास करवा मैराथन क्विज ऑफ हिस्ट्री सी यू देयर बाय बाय।